Hello. Welcome back to my channel, the Nifty City. Brilliant day, right? Right from the open, we analyzed the data. Telegram group में post कर दिया था already. Sideways day, 18,900 resistance, good call writing, 18,800 support, good put writing, 18,900 के पास short trade initiate हुआ. Support पे clearly post कर दिया था कि Nifty is at supports, Bank Nifty is at support, can bounce back भी आया. Okay, so everything worked well today. Now tomorrow important expiry है, so let's see how we can trade, what are the levels. uh, we'll also be discussing, there is this one of our subscribers who's continuously asking how to place a stop loss while doing option buying. Okay, so we'll discuss that, how to place a stop loss, and we will discuss our stocks. So stay tuned. लेट्स डाइव इन. सबसे पहले लेट्स डिस्कस निफ्टी. ओके, तो निफ्टी का डेली चार्ट है ये. अब निफ्टी के डेली चार्ट पे क्या है, वी हैव क्लोज्ड हायर हाई. सो दिस वाज प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू टेक आउट द मेजर, जो इधर का ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, ये हमने टेक आउट नहीं किया है. सो टिल द टाइम वी डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग कंफर्टेबली अबव 18,900, टिल दैट टाइम वी कैनॉट गो अग्रेसिवली लॉन्ग. ओके, इंट्राडे में सपोर्ट्स के पास लॉन्ग कर लिया, इज अ डिफरेंट इशू, बट पोजिशनल लॉन्ग विल ओनली बी अबव 18,900. नाउ एज पर डेटा व्हाट वी हैव, 18,800 एंड 18,700 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग है. दीज आर द सपोर्ट्स. सो ये हमको क्लियर है. नाउ लेट्स क्विकली डाइव इन टू द आर्ली चार्ट. आर्ली चार्ट पे क्या है, यू कैन सी हियर, ये एक रेजिस्टेंस लिया, इधर से हम नीचे आए, वापस इधर गए, वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, और इधर ही साइडवेज क्लोज कर दिया. नाउ लेट्स क्विकली गेट इनटू द 15 मिनट चार्ट वेयर वी विल अनवील ऑल द लेवल्स. ओके, सो नाउ दीज आर द लेवल्स. ठीक है, ये जोन कल भी मार्क था, कल के वीडियो में उठा के देख लेना. कल के वीडियो में 778 टू 794, ये जोन ऐसे का ऐसे ही मार्क था. एग्जैक्टली एट दिस जोन सपोर्ट लिया है. ओके, सो देयर वाज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड टुडे. ये ऊपर गया, 18,900 का रेजिस्टेंस था, इधर से फॉल दिया है. ओके, एग्जैक्ट 5 EMA सेटअप ट्रिगर हुआ है. अगर किसी ने हमारा 5 EMA का वीडियो नहीं देखा है, 5 EMA स्ट्रैटेजी का, द लिंक यू विल गेट राइट नाउ, राइट अप, इफ यू सी आई बटन में तुमको लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देख लेना. 5 EMA सेटअप, इट्स अ वेरी गुड सेटअप फॉर ऑप्शन बायर्स. नाउ व्हाट डू वी हैव हियर, व्हाट इज टुमारोज प्लान ऑफ एक्शन. ओके, अभी एक डेवलपमेंट जो अभी अभी हुई है व्हाइल आई वाज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज, जो फेड के चेयरमैन है पॉल साहब, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि ईयर एंड तक it's a unanimous decision, interest rate hike is going to happen. Now because of that, what has happened is there has been slight bearish sentiment in US markets, and SGX Nifty is 50 points down as of now. So we can comfortably say कि कल flat to gap down opening होने वाला है. Right now what important level we have here, जिसके नीचे short बनता है, that is 18,826 के नीचे short बनता है for a small scalp trade till 18,800. below this level, that is 794 के नीचे, you can go short little more aggressive. Confirmation you will get below 18,770. Okay, 18,770 के नीचे 18,800 के put writers will have to cover, and definitely we can see a flow. Now below that what we have 18,710 and 18,670, these two levels as supports. Below 636, okay, this is the major level, 636 के नीचे we can have a free fall. Okay, if this happens tomorrow, we can have a brilliant trending expiry. But as of now, what we have to do, we have to go as per confirmations, as per levels. On the higher side, what we have 18,887, which is our all-time high. इसके ऊपर निकलते ही we will be bullish in the market, although 18,900 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है. सो ऐसा ना हो कि ये एक ब्रेकआउट देके फेल हो जाए. सिनारियो अनलाइकली है, बट हो सकता है. कीप दैट इन माइंड. डाउनसाइड पे लेवल्स हैव बीन क्लियरली एक्सप्लेन्ड. नाउ लेट्स क्विकली गेट इनटू बैंक निफ्टी. ओके, नाउ बैंक निफ्टी पे व्हाट वी हैव, बैंक निफ्टी यही रेंज में है अभी फिलहाल, उसी रेंज के अंदर क्लोजिंग आई है आज भी. आर्ली चार्ट पे व्हाट डू वी हैव, आर्ली चार्ट पे नथिंग सिग्निफिकेंट that I can discuss here. Let's quickly get into the 15-minute chart with the levels.
Okay, now 15-minute chart pe what we have, very simple, 43,706 is our support level. 706 break hote hi we will see some momentum on the downside. 43,500 and 43,400, this is the support area. Okay, 43,350 is the major support, जिसके नीचे चीजें काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगी बैंक निफ्टी में। ठीक है, आज का काफी ज्यादा रैली का पार्ट था एचडीएफसी बैंक के, एचडीएफसी बैंक हैज रियली सपोर्टेड देम, but we don't know how tomorrow markets are going to react. On the upside, one level and one level only is 44,077. ये जो level दिख रहा है आपको, 44,000 is a big tower, big resistance. मोस्टली एक्सपायरी इसके नीचे नीचे होनी चाहिए। अगर ये 44,077 क्रॉस होता है, देन वी कैन सी अ वेरी गुड मूव इन बैंक निफ्टी ऑन द अपसाइड, राइट? सो हाउ डू वी ट्रेड? डाउनसाइड या तो 43,706 43,700 ब्रेक हो, या तो अपसाइड पे 44,080 ब्रेक हो। ओके, एनी साइड वी विल गेट अ ट्रेड। नाउ कमिंग डाउन टू द टॉपिक ऑफ हाउ टू सेट a stop loss in options. Okay, now it depends what kind of options are you buying. My recommendation always is to buy ATM options. ATM option मतलब क्या होता है? At the money options. What is at the money? For those of you who don't know, those of you who are very new to options, वैसे if you don't know these basic things, you should not trade in options. But if you're learning, so let's say current market price of Bank Nifty is 43,859. Okay, so you can consider 43,900 as at the money, closest strike price. At the money ka delta is more or less plus minus 50. Okay, so what that suggests is, let's say for example आपने 43,900 का put खरीदा, let's say for 200 bucks. ठीक है, 200 का आपने 43,900 का put खरीदा. Now what I would do here is keep my mental stop loss as per my chart. Now for example, if I'm buying 43,900 का put somewhere here, ओके, नाउ आई नो योर माई रिस्क इज वेरी लेस। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट है इधर, अगर मैं इधर बाय कर रहा हूं तो इसके ऊपर अगर मेरे को क्लोजिंग आ गई तो मेरा एग्जिट है। सो माई रिस्क इज वेरी लेस। ओके, सो आई डिफाइन दिस रिस्क इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। दिस विल बी अराउंड से 25 पॉइंट्स रफली का मेरा स्टॉप लॉस है एज पर माई बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट। ये सेम चीज आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं, बट एज पर बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट 25 पॉइंट्स इज माई रिस्क। सो व्हाट विल बी माई रिस्क इन ऑप्शंस? 0.5 डेल्टा के हिसाब से 12.5 पॉइंट्स। ओके, तो अगर मैं इसको राउंड फिगर 13 पॉइंट्स मान लेते हैं, अगर मैं 200 का पुट खरीद रहा हूं, माई मेंटल स्टॉप लॉस शुड बी समवेयर अराउंड 187 और 185 should be my stop loss. Okay, this is one way to go about it. This is the best way to go about it. What I do is I play as per levels. If this is my stop loss, then as soon as my spot chart reaches this level, be whatever the price of the option, I will exit. Okay, so I don't care if it's 187, if it's 180, if it's 190, if it's 150. As per my chart, agar ye mera stop loss hai, so I will exit here irrespective of the price of the option. Now, another way of doing this is for in your broker. Now, this is, for example, I've just opened this. So let's say this is 18,900 Nifty ka put ka chart. Okay. Now, if I'm somewhere taking entry here, then my stop loss is going to be where? Okay. Now I've taken entry here. Abhi iske niche trade hua nahi hai. So let's take another example. Let's take an example that, for example, I entered here. Okay. इधर मैंने enter किया. अब मेरा प्रीवियस स्विंग ये है। ओके, सो कहने का मतलब क्या है? यू टेक दिस एज अ नॉर्मल प्राइस एक्शन सेटअप चार्ट। ओके, इसकी एक्यूरेसी आपको काफी कम मिलेगी, बिकॉज ऑप्शंस आर नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय प्राइस, इसमें टाइम वैल्यू आता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आती है, काफी सारे डायमेंशंस आते हैं। सो यू कैन नॉट डिक्टेट दिस एज अ प्राइस चार्ट, बट दिस इज अ टेक्निक दैट सम पीपल use. Okay, so you can use this, you can mark the swings here. Okay, for example, here this swing will be somewhere around 110, तो 110 का swing आप mark करके रख सकते हो for a reference point. Now before we move on to the stocks, please hit the like button on the video, please comment, subscribe to the channel. 75% of our viewers don't subscribe, I don't know why. Free hai, please subscribe to the channel. Now let's quickly check out the stocks. Okay, now we have Polycab here.
अब पॉलीकैब में क्या हो रहा है, पॉलीकैब में एक रेंज में था, काफी अच्छा अपमूव था, उसके बाद एक रेंज में था, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है। ओके, क्लियर कट रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है। नाउ व्हाट वी वांट इज, वी वांट कि ये लेवल के नीचे पॉलीकैब निकले। ओके, ये एक रेजिस्टेंस था, नीचे आया, रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया, ये हमारा अभी सपोर्ट है, 50 ईएमए का भी सपोर्ट है। सो 3360, 3360 के नीचे पॉलीकैब इज अ सेल। What is our target? If we get this trade, our target will be somewhere around here, 3143. Okay, or this swing you can say 3173. 3143 से लेके 3173 के बीच में will be our target in polycap. What will be our stop loss? ये जो कैंडल होगा जो इसको ब्रेक करेगा, इसका हाई will be our stop loss. Okay, this is stock recommendation number one. Number two, tomorrow, if we are bearish, then definitely this banking stock will give you good returns. This is Bandhan Bank. Bandhan Bank ने breakdown already दे दिया है with confirmation. Okay, you can see with decent volume breakdown 50 and 200 EMA का breakdown इधर हो चुका है. Now, the moment suppose we open somewhere flat or a slight gap down in Bandhan Bank, इसके लो पे ब्रेकडाउन पे वी कैन टेक एन एंट्री एंड टारगेट विल बी दिस 230 का टारगेट होगा बंधन बैंक। ओके, स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल का हाई। क्लियर कट, राइट गाइस, टुमारो इज एक्सपायरी, ऑल द वेरी बेस्ट, ट्रेड स्मार्टली, ट्रेड सेफली, एंड टुमारो एक्सपेक्टिंग सम एक्शन इफ द लेवल्स ब्रेक, कंफर्मेशन पे ट्रेड करना एज यूजुअल। टुमारो मॉर्निंग डेटा विल बी शेयर्ड विद यू गाइस, कैसा डेटा बिल्डअप है, क्या कुछ हो रहा है, वी विल बी इन टच। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर गाइस।